Yes, children, we have already done the precautions which we have to take while drafting a questionnaire. We all know that the questionnaire should be of suitable size, it should be of simple language, there should be instructions, give multiple choice questions, do not include mathematical questions, and do not hurt the sentiments of the respondent. And these were some of the questions, some of the things that we have to keep in mind while drafting a questionnaire, while making a questionnaire. So I have made a sample of questionnaire which I want to share with you. This is my questionnaire. Okay, make sure you make it attractive. As I said, you can do that by giving a border, or make it nice and attractive. Use proper fonts. Okay, now first thing you have to be careful about is that you have to list what is this questionnaire about. It is about consumer awareness. The topic should be there. Okay, then instructions, as I've told you, should be there. uh, Please make sure that there are only 3 to 4 instructions. I have just given 2. You can add if you want. You can say use a blue pen or a black pen, or you can say that all information will be kept confidential. Then all this, name, address, educational qualification, income, employment status, you can put gender, male, female. All this will come under personal information. Okay, all this is your personal information. Then the questionnaire will start. Okay, now this is the questionnaire on consumer awareness. Make sure that the questions are related to consumer awareness. Okay, and make the questions interesting. For example, my first question is, while purchasing commodity, do you ask for cash memo? Cash memo is the bill, and you can give the alternatives: always, sometimes, never, or you can also say yes, no, whichever you like. Then, do you check for manufacturing date? Yes, no. Expiry date? Yes, no. MRP? Yes, no. Right? You can do that, or you can ask, do you know what is MRP? Okay, so give the options. MRP is, a maximum retail price or minimum retail price, so that you know what the consumer is doing. Okay, so that we actually know whether the consumer is actually knows what MRP is. You can even put questions like this. Okay, this is just a sample. Okay, then a product has a red mark on its label. What does it indicate? Does it indicate a product is very spicy, or the product has vegetarian ingredients, or the product is non-vegetarian? So the consumer is going to tick only one, which is what I have put, that please choose only one alternative, right? Then you can also put questions like, what is the stamp of hallmark? In which product is it found? Because if you ask a consumer that, do you check for quality trademarks, like egg mark is there, ISI is there, तो सब क्या बोलेंगे? सब बोलेंगे हाँ, हम सब चेक करते हैं, क्योंकि कोई भी ये नहीं मानना चाहता कि वो क्या है, एक फूल है और वो चीट होने के लिए तैयार है, चीटिंग, इज़ रेडी टू बीइंग चीटेड, तो वो हमेशा आप लिखेंगे येस। तो अगर आप ये पूछें कि हॉलमार्क का स्टैम्प किस पे पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, या ज्वेलरी पे, तो अगर वो सही टिक करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसको वो इन चीज़ों से अवेयर, इनके बारे में अवेयर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें चेक क्या करना है कि कंज्यूमर कितना अवेयर है और कितना नहीं है। ठीक है, फिर हम पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ अडल्टरेशन अकॉर्डिंग टू यू? ठीक है, गिव 3-4 पॉइंट्स, 3 से 4 आप ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं, उसको एक ही चूज़ करना होगा। ऐसे ही मैंने बनाया है, अगर आप शॉपकीपर से चीटेड हो गए हैं, इफ़ यू आर चीटेड बाय द शॉपकीपर, वेयर विल यू गो? विल यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट और द कंज्यूमर कोर्ट और द हाई कोर्ट? ऐसे ही आप 10 से 12 क्वेश्चन जो है आप ऐसे वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप this is I hope you've understood this. Keep the language simple, make the questionnaire interesting. Okay, बार बार ये पूछेंगे, do you check the expiry date, do you check manufacturing date, do you check this, do you take cash bill, तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। Make it interesting. ठीक है, make it interesting. Ask questions like, do you purchase tickets in black, movie tickets in black? ठीक है, या फिर हाउ कैन यू बी चीटेड वाइल बाइंग अ गैस सिलेंडर? तो इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या कंज्यूमर सच्ची में अवेयर है कि नहीं। ठीक है, सो दिस इज़ अ सैम्पल ऑफ द क्वेश्चनएयर. You can give different options, but as I've told you,
ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपने नहीं पुट करने हैं, ठीक है। दिस इज़ अ सैम्पल ऑफ क्वेश्चन है। अच्छे से, मेरे को तो इतना अच्छा, आई एम नॉट दैट क्रिएटिव, सो आई हैव जस्ट मेड अ सिंपल मार्जिन, यू कैन डेकोरेट इट। और अपना सैम्पल क्वेश्चनेयर में जो क्वेश्चंस हैं वो कितने रखने हैं आपने, 10 से 12, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रखने हैं, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू दैट। थैंक यू।